paper में the review was filed on the grounds that the applicants were not a party in the main petition. तो उस केस में जब हम रिव्यू पिटिशन फाइल करेंगे तो रिव्यू पिटिशन का नेम ऑफ द पार्टीज क्या होगा? Will the name of the parties be the name of the original petition, or the applicants will be made the petitioners and remaining all the parties will be made the respondents? नहीं, देखिए, जब did you have you any idea regarding कि इंटरवीनर कैसे फाइल करते हैं? सर अभी वो टॉपिक नहीं किया, वो एप्लीकेशन आपने देखा नहीं. दरअसल जो उसकी जो काउस टाइटल होती है ना, A वर्सेस B, सो इन द मैटर ऑफ A वर्सेस B एंड द एप्लीकेंट का नाम नीचे आता है, एप्लीकेंट इज दिस. ओके, सो कहीं से भी आप थोड़ा सा अरेंज कीजिए. एग्जैक्टली आई डोंट हैव कहाँ पर है तो मेरे पास जरूर, लेकिन कहाँ पर है आई हैव नो आइडिया, क्योंकि इंटरव्यूनर उसमें मेन पार्टी पे होता नहीं है ना. ओके, राइट. सो उस केस में उसका एप्लीकेंट के जगह पर नाम होता है. सो वन सॉर्ट ऑफ जस्ट सिमिलर टू कॉस्ट टाइटल, वहाँ एप्लीकेंट करके वहाँ लिखते हैं. So applicant वाला जो concept है, same concept would be applicable into the review. Okay, and the main cause title will stay as the main petition का जो cause title था. Exactly. Okay. In that, okay. Okay. So in the main, the application is this. So वो. ठीक है. And sir, जैसे इसी question में मैं देख रही हूँ. एक चीज और मैं उसमें substantiate करना चाहता हूँ. If someone is filing वकालतनामा for SLP or in any petition, that the validity of the वकालतनामा is not only confined to the SLP, even it is a valid for review till curative. So no need to file this वकालतनामा. Only an application will sufficient for that. If someone want to replace the advocate on record, they have to take an NOC. Okay. So this is the another part. Here is ये बात मेरे दिमाग में इसलिए आया कि once you are filing an application, then certainly वो भी on behalf of those who was not party before that court in the SLP or any matter pending under review. So उस कंडीशन में एक फ्रेश वकालतनामा is required for the fresh party. It may not be or may be, it certainly it will be, क्योंकि यदि वही एडवोकेट है जिसने रिव्यू फाइल किया था, बट फिर भी उसको आपके बिहाफ पे फ्रेश वकालतनामा की रिक्वायरमेंट. Now continue with your question. सर इसी क्वेश्चन में जो ऑर्डर चैलेंज किया था that was of 11 September 2022. Usually the limitation for filing a review petition is 30 days. So should we ignore the part where we have to mention that there is need to for an application? You need to be careful. You need to be especially careful regarding this particular part. So should we file a separate application along with the main petition for condonation delay, and even if it is not asked? No. If it is not asked, then we can leave it. But be aware at this juncture, because this is a very important part. Once the 30-day delays is there, you must have to move an application, and that is the mandatory application. Okay. And once they are not talking, आप एक लाइन नीचे safely लिख दो कि this is concerned with the delay. Since this is not asked, so I am not intervening. Understood. So for the sake of fairness and transparency and clarity, ये part वहाँ पे रहेगा, then the very safe side you can play on that part. Understood. So एक और question I was discussing with Ajay sir also today, that what is the remedy for seeking modification of an order when you are not a party to the list? This provision is usually discussed in curative petition, but then we cannot ignore the fact that as per this question, the review has already been filed, SLP has already been filed. So what should be the correct? So in another case, I got your questions. In another case, this is concerned to molding of relief. Right? Molding of relief, why? Because we are not concerned
to the party, so we did not projected our prayer. So relief is accordingly to the prayer. Now we want to alter that relief, right? It's a molding, and it is happening usually by exercising, that is the article 142, to do the complete system. I guess I'm clear enough to answer your question. But which petition has to be filed under Article 142 only? No, any petition, any application. See, if you will go through that this AoR Antule case, reissue let down into the AoR Antule case. That is let down at one place. The Supreme Court can exercise their review jurisdiction in any matter pending before it, even though they can take suo motu. In any application, or even जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, even later will be passed to the court and court will take a cognizance in certain. See, 142 मैंने recently सुना है and it was literally surprising for me. एक कोर्ट में एक मैटर में 142 एक्सरसाइज करने की बात आई थी और कोर्ट ने ये कहा था कि अच्छा उससे एप्लीकेशन लेकर के आई. यूजुअली 142 को एक्सरसाइज कराने के लिए कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन होता नहीं, और कोर्ट क्या करती है, बट आप ड्राफ्ट कर सकते हैं, एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना, दैट इज योर ओन रिस्क. 142 पे आप इसको इन्वोक कर लो, बट दिस इज यूजुअली द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट. As and when they realize that there is a requirement of 142 to do complete justice, in a particular case, alter the mode of relief or anything, or even the dehorse the statutory provision. आप जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, PMLA एक्ट के तहत पूरा प्रोसीजर चलता हुआ सुप्रीम कोर्ट तक आया और इवन कन्विक्शन वगैरह. Somewhere it is realized कि some due process, due means expected, not through the procedure letter. Something may be missing in the procedure letter, right? So something, मतलब सारा कुछ प्रोसीजर के साथ हुआ है, लेकिन इनजस्टिस हो रहा है, या फिर कहीं ना कहीं मोल्डिंग ऑफ रिलीफ की रिक्वायरमेंट है फॉर द पर्पस ऑफ पार्टी, राइट? तो समथिंग दे कैन बी, इवन आप देख लीजिए ना, दूसरा एग्जांपल में क्रिमिनल का ले लो, वो क्लियरिटी वहां पर आ जाएगी. क्रिमिनल केसेस में होता क्या है कि 10 साल का पनिशमेंट है, 7 to 10 का रेंज है, मिनिमम 10 ले लिया गया, और उसके बाद SLP में कोर्ट में आते हैं और यहाँ पर इवन अपील में हम उनको कहते हैं क्या कि सी इन्होंने 7 years जो है ना वो कन्विक्शन सर्व कर दिया है सेंटेंस, अब इसके सेंटेंस को आप वेव कर दीजिए और रिलीज ऑन बेल. कोर्ट करती है चलो ठीक है इतना दिन रह गया, इसके कंडक्ट्स वगैरह से वी आर डूइंग. इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट कोर्ट इज डूइंग, molding the relief and dehorse the statutory provision, क्योंकि statutory provision में मिनिमम 7 मैक्सिमम 10 किया हुआ है, उसके अगेंस्ट जाकर के 5 पे ही उसको रिलीज करने का ऑर्डर देती है. अंडर विच पावर कहां से आता है? दैट पावर इज कमिंग थ्रू 142 itself टू डू कंप्लीट जस्टिस. अब मान लो कि उसको यदि रिलीज नहीं किया जाए और उसके बच्चे का कैरियर अफेक्ट हो रहा हो या फैमिली किसी भी तरीके से बिखर रही हो, यू नो द इमर्जिंग सर्कमस्टांसेस का रिक्वायरमेंट है कि उसको रिलीज किया जाए, तो उसको आप जेल में रख करके कोई पर्पस तो अचीव नहीं करो. एंड यहाँ पे टू डू कंप्लीट जस्टिस 142 इज रिक्वायर्ड, isn't it? Sir, but that is when the court is exercising its power. What I can understand that this question means, as a applicant or as a petitioner, what remedy do I have if I have not been made a party in a certain kind of a petition? Now the question is silent कि अभी तक SLP file हो चुकी है, review file हो चुका है. So just to approach this question, should we start from the very beginning that we have to file? मतलब on that, see, take the impugned order, a movement review for that.
Okay. Move an application by explaining your locus and move that application. So one formal application will go before the court. See, एक चीज तो हम ये मानते हैं ना, in any matter pending or disposed of, in any matter, an application can go by anyone. Anyone means by the third party. Can go ना, so we can use through that mode itself. क्योंकि मैं यदि practically करूं, then I will adopt the same mode. Yes, Right. sir, that makes more sense, I believe, as madam just said. Mold and मेरी भी यही understanding थी. Molding of relief तो probably when the matter is at the helm and the court is going out of the statutory parameters, or just to do complete justice they are giving something extra or something different than what is prayed for or what the statute allows, but the matter is still alive and happening for the sake of better relief. But what And that is why only I am saying order 55 is there yes sir, to waive off any procedure. any procedure, but है ना? the question pertains to And when that the is the matter has requirement for this court. yes sir, the question pertained to that the matter has already been decided, now what to do, thus so but this is I believe हमारा भी decision review के ऊपर ही आया था कि for if it is a civil case then any other good cause shown is one of the grounds and error apparent on face of The the idea is this, मैं एकदम clear कर दूं, idea is this, take the help of review rules, sir, and in general one application move to the in any matter by the third party. This is the one part. And another part is 142 molding of relief. 3 different ingredients are there for the different purpose. And combined all these theory. Your solution is in your hand. So do the needful as per required, but the ultimate option is this. Injustice नहीं होना चाहिए, वो हमारा इंश्योर करना, that is also our exalted responsibility. कोर्ट के नॉलेज में लाना चाहिए. मेरा एक दोस्त है, he was also part of that group और वो भी AoR बना. उसके सामने एक मैटर आया गुजरात हाई कोर्ट से, and it was the very peculiar matter. मैटर ये था कि गुजरात, it was the concern to the termination of pregnancy of rape victim, और उसके लिए एक सर्टेन पीरियड है कि इस पीरियड के अंदर ही आप termination of pregnancy can be allowed, and that period was at threshold, मतलब वो पहुंचने वाला था. This case came from Gujarat High Court, and Gujarat High Court said, I am not allowing. However, parties are convinced, doctors were ready. And not only that, गुजरात हाई कोर्ट ने अगला डेट 4 सप्ताह का बाद का लगाया, और 4 सप्ताह के अंदर वो the pregnancy is all being much complicated, and the threat of life of this lady as well as the child also is going to under threat. और 4 सप्ताह के बाद उसने सुना भी, और सुनने के बाद गुजरात हाई कोर्ट ने क्या किया, सिर्फ बोला डिसमिस सर्टेन रीजंस पे, वो बोल दिया और डिसमिस कर दिया, और उसके 4 दिनों के बाद तक, 5 दिनों के बाद तक उसने जजमेंट ही अपलोड नहीं किया. सो इम्पुग्न्ड ऑर्डर वाज नॉट देयर एंड टाइम वाज गोइंग ऑन. और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट थे उसको साइड करने के बाद भी उसको डिक्लेयर किया कि नो आई एम नॉट, मैं उसको नहीं मानता. उसने क्या किया, वी सेट एंड डिस्कस इट, सो वी ड्राफ्टेड एन SLP without impugned order. Can you believe this? At the place of impugned order, we narrated the every event, what was happened before that, Gujarat High Court, and we narrated that this was the submission, this was the disposal, and this is the status of the Gujarat High Court, which is saying disposed of, but judgment is not approved.
And this is the urgency of this particular case. We moved that application to Supreme Court, and you can't believe me, आई गेस पावर कट हो गया सर की साइड पे. अजय जी, जो क्वेश्चन अभी भावना मैम ने पूछा था ना, व्हाट आई फील कि इसमें हमें रिव्यू में ही जाना चाहिए, क्योंकि जो व्हाट एवर आई हैव स्टडीड इन द रिव्यू वाला ऑर्डर, इन दैट दे आर सेइंग इफ द थर्ड पार्टी इज अफेक्टेड बाय द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, then the third party also can move for a review. Okay, so whatever is the judgment of the Supreme Court, on that basis we can go for a review. Only we have to prove quote our locus, and then how this decision is affecting us, how our right are affected in that we have to write, and then we have to pray. That's it. That would be a review. Yes, so that is the whole point. And in that case, we are assuming that the SLP has already been disposed of, and now maybe even a criminal or a civil appeal has been Whatever disposed it may be. Yeah, whatever it may be. We have to see the question. How is the question? Whether in a question they are saying, in that if it is. Actually, Ajay sir and Bhavna ma'am, with due respect, may I suggest or may I ask one thing? Please. In that review, can we seek for the modification as well? I'm sorry, the power is off at my house, so Wi-Fi is off. Now mobile is unfunctional, so I cannot on my video at all. That's okay, sir. Hello? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No issue, sir. So मैं ये कह रहा था on that particular case, to do complete justice and that particular case, कोर्ट ने क्या किया, वो इस मैटर को सैटरडे को कोर्ट में लगाया, सैटरडे ऑन हॉलीडे पॉइंट, और उस दिन वो मैटर लिस्ट किया गया. वेरी फर्स्ट मॉर्निंग को, मंडे को भी वो मैटर लगाया गया. बेटा हल्ला मत करो प्लीज. और फाइनली रिलीज किया गया. पॉइंट इज दिस, टू कंप्लीट जस्टिस ये होना. अ लॉट ऑफ है हमारे यहाँ. मैं थोड़ा वीडियो ऑन करना चाहता हूँ. Yes, sir. देखिए, बहुत बड़ी आंधी चल रही है. मैं छत पे हूँ. चलो क्वेश्चन ये जो भावना मैडम ने भी बोला है कि if we go with the review petition, नीचे चलो बेटा. स्वाति जी एक मिनट. नीचे चलो. सर आई रिक्वेस्ट आप माइक ऑफ कर लेंगे, म्यूट कर लेंगे थोड़ी देर प्लीज. Bhavna, can you just repeat the question? Is it in relation to specifically a review or a curative, or is it a general modification of content? Can you just repeat the question? Question was with regards to general एक मिनट. राजीव सर. Ajay ji, I'm unable to answer any questions, so lot of voice is coming from outside. हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर आप माइक म्यूट कर लें, क्योंकि हवा का बहुत. आप लोग अभी कंडक्ट कीजिए, मैं बस पार्टिसिपेट कर रहा हूँ आपके साथ. सर मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा था, आप म्यूट रखें माइक प्लीज, वो हवा बहुत आ रही है पीछे से. आवाज भी क्लियर नहीं आ रही है अजय जी. मैं अपना आवाज को म्यूट कर रहा हूँ, प्लीज आप लोग कंडक्ट कर लीजिए. थैंक यू. मैं सुन रहा हूँ तो, और इवन द वॉइस इज ऑल्सो ब्रेकिंग हियर. Am I audible to all of you? यस सर, यू आर ऑडिबल. पीछे से हवा की आवाज आ रही है. From your background, sir. बैकग्राउंड भयानक आंधी चल रही है और मैं छत पे हूँ, तो नेटवर्क का वो जो है ना इश्यूज है. पावर ऑफिस ने वाईफाई कंटिन्यू नहीं है. उसको ठीक है. म्यूट की रिक्वेस्ट थी सर. इफ यू कैन म्यूट राजीव सर. मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, प्लीज आप लोग कंटिन्यू कीजिए इंटरनली. टुडे आई एम वेरी सॉरी. म्यूट कर लें राजीव सर प्लीज. सॉरी.
म्यूट कर लें सर. हाँ, थैंक यू सर थैंक यू सर. हाँ स्वाति जी, Can you कुछ just कह read रहे the थे. question? हाँ सर, मैं ये बोल रही थी but question on which Bhavna madam has asked is, if we go with the review in this matter, in specific question, so can we ask, मतलब review में तो हम लोग basically अपना वो जो impugn order है, impugn judgment है, उसका review मांगते हैं. So being the third party, can we seek an prayer or can we raise a point being the third party that we were on the party then and there only, and now we are coming to this court with a new way, new picture before this court, how I am relatable to this whole scenario, whole impugn judgment. So please do the needful and modify the order. Not only review the order, review the impugn judgment, but also modify as per my picture, as per my case, as per my pleadings. So is there possibility to seek for the modification in that respective review petition, or do we need to seek a modification of the specific impugn order along with that review petition? मतलब do we need to file two different things, review petition along with the modification of the order, modification of specific impugn order? I think review So, petition we should should solve the problem. Just one moment. Niharika ma'am's point was valid here. Okay, sir, can we have that question once, yes, please? I was Because- coming on that only. Kindly read the question because many doubts will be cleared. Niharika ma'am had asked this point that kindly read that particular question so that we can all brainstorm. Bhavna ji, please. The question was, what is the remedy for seeking modification of an order when the person is not a party to the list? So they have just said order. It is not mentioned that it is against an SLP or an appeal or anything of that sort. It is simply modification of an order. So that was my question, Chief Sir. Bhavna, what answer you have wrote in this? What is your answer? I have written nothing, but now I feel that we have to presume that this is against an SLP or an appeal. And yes, against that, if you are not a party, a review is maintainable. That's one of the questions which came in 2023 also in drafting paper. Can it be an intervention? No, intervention cannot be allowed for the third party. Sorry, sir. Okay. I think error apparent on the face of it should cover when somebody is not a party, and hence a review can be maintainable in such a Shraddha ji, That mute is- kar Or a lo. sufficient have to cause. file Shraddha ji, permission mute to kar file the review along with the impugned order, along with the review. First, they will give us the permission to file review on the basis of that you were not the party, but you are affected party on the basis of apparent error, and then they will dispose of your review either through circulation, and along with you can also file an oral application or application for oral hearing. Shraddha ji, mute. Correct me if I am wrong, if anyone can. Shraddha ji, mute kar le please. That one thing is sure that if you're not a party, a review petition is maintainable, and how I can conclude is based on 2023's drafting paper, wherein the question has itself said that the applicant was not a party while the main impugned judgment was passed, and hence this third party now wants to file a review petition, so draft a review petition. This is a separate topic that I'm talking about, but that is how I know that if you're not a party, you can file a review petition against the impugned judgment passed by the Honorable Supreme Court. So that question should not be, if anybody has any different take on it, I can. Now, when I hear about modification of an order, two things come to my mind. One is that modification can be trivial, probably a name of a person or a place or something which is just trivial. It has no impact on the reasoning or the decision taken. That can be one type of modification. Second type of modification can be that judgment affects my interest, my rights are being hurt, and thus I must be heard, and a further decision must be taken because this has been passed without following principles of natural justice. So this becomes second type of prayer for a second type of modification.
So first type of modification I believe can be a simple application, but if though it is not made clear, but when such a thing comes, then only review can be sought, because if we pray for a review, then that appeal will again be opened, the decision will be set aside, there will be a rehearing, and we can put our points across that this is my position. In that review petition we can say that there is an error apparent on the face of record if it is a criminal side, and if it is a civil side, then there are 2 or 3 grounds, one of them being error apparent and the second being for any sufficient reason shown. So the sufficient reason in this case can be, Priyankarji, 2 places are open. Sufficient reason in this can be that I was not a party to the list, but the judgment affects me personally. So I He's right that the judgment affects me, and that's why this is sufficient cause. Yes, that was my understanding of the whole thing. I welcome more views. But then jumping into review, we are presuming a lot of things that. Anyways, review is the only answer, I think. So Bhavna, I'll just give my inputs. So there are 2 different questions where So they are. we can file review without asking the permission. I don't think you need permission to file a review. Niharika ji was saying. I just have, so there are 2 questions here. One is a normal modification, and when a person is not a party to the list. And the second is where they specifically talk about review, right? So in the second one, when they're talking about this, I had asked this someone, so I'm telling you what I know, what I would have done if this had come in examination as of today. Where review, where I'm the affected party but not party to the list anywhere, and the review has to be filed, then I will make the review petition. In the review petition, there will be an IA, like we file IA in review petition. That IA will say permission to file review petition. Because I do not have the permission to file review petition because I was not party to a list. So I will file an IA within the review petition, like we file an IA for exemption or OT, like official translation, exemption from surrender and stuff like that. So an IA will be filed asking for permission to review, and before the court, first the IA will get decided whether I even have the permission to file the review, and then a hearing on the review will happen if the IA is granted. Yes, that is what I'm saying. And one more thing I would like to add. The error apparent on the face of record, it is the one ground for civil SLP and the only ground for the criminal review. But there are 2 and 3 more grounds also available for the review civil. That is Order 47. Discovery of new facts and evidence. So this factor is also keep in mind before filing that, and this is very correct. You need to file an application to permission to file and review. Thank you. Bhavna, the first one was where they're not talking about review at all, right? So, and you are saying you do not know if the SLP is filed or SLP is dismissed or what is happening. There also, you will also write, you can file, I don't know what the situation may be, whether if it is pending, you can have an impleadment in the SLP itself if you are a proper party, if you are a necessary party. If you are not such a party, you can have an application for intervener. And if that is also not the case, and if this is a fresh something, then again you will file an SLP in that IA saying permission to file this SLP. But she is talking about the only, I guess, review, right? No, so she asked 2 different questions where we got confused. So then I just bifurcated the 2, and one is without the review, one is with the review. I was just answering those separately. But one more thing I would like to advise: if you have an option to avoid this question, please avoid it. Yes, sir. That's the best way out, sir. It is important. Otherwise, जब option ना हो, then go ahead. Also, sir, like last year की तरह जो 5 questions compulsory कर दिया था drafting. That's why I said ना. Oh, this was not a drafting question. This was a practice and procedure question. Practice and procedure. Correct. Sir, may I ask one doubt? You had mentioned 3 grounds. One was error apparent on the face of record, and
the more discovery of new facts and evidence. There are two only, or there is one more, right? Sufficient cause. Sufficient Any reason sufficient shown. cause. By Bona fide mistake. Supreme Court rules, it is rule to order 47 of the CPC, Rule 1. Yes, sir. Yes, sir. That will find to Rule 1 only. Go to the Rule 1 Yes, of sir. CPC, you will Yes, find out the all. Yes, 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 sir. Yeah. Bharat ji, please. Sir, in 2017, question number 3, the question has asked regarding the draft SLP on behalf of the state government challenging the judgment of division bench with synopsis, list dates and application for stay. My query is that application for stay need not to file a separate application like IA. इंट्री में इसको मेंशन कर दें उससे हो जाएगा या अलग से फाइल करना पड़ेगा सर, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफिकली फिर से रिपीट कीजिए, मैं समझा सर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ड्राफ्ट एसएलपी ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट गवर्नमेंट चैलेंजिंग द जजमेंट ऑफ द डिवीजन बेंच विथ सिनॉप्सिस डिवीजन बेंच ऑफ व्हाट, हाई कोर्ट जी हाँ एंड एप्लीकेशन फॉर स्टे. मेरा क्वेरी इन क्वेश्चन ये है सर कि एप्लीकेशन फॉर स्टे के लिए स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, तो हम एंट्री में लिख दें तो चलेगा या अलग से हमें एग्जैक्टली इंट्रीम के लिए इंट्रीम में ही वो ग्राउंड ले लें और पीरियड ले लें, अलग से हमें करने की जरूरत नहीं है सर से. जरूरत नहीं. राइट सर. फाइलिंग द एसएलपी ना, एसएलपी में प्रॉपर प्लेस उसके लिए है सर. एंड नेक्स्ट डाउट सर उसी ईयर का 2017 का पेपर है, लास्ट क्वेश्चन है उसमें ये बोला सर ड्राफ्ट और ट्रांसफर पिटीशन ऑन बिहाफ ऑफ वाइफ अंडर सेक्शन 25 ऑफ द सीपीसी, सिनॉप्सिस लिस्ट डेट्स नॉट रिक्वायर्ड. बट एक मैं आपका वो देखा था 2021 का आपका आंसर शीट सर, उसमें आपने प्रेयर फॉर एंट्री रिलीफ लिखा है सर, दो इट इज नॉट आस्क्ड सर. तो क्या हमें सर नहीं पूछा जाए तो भी लिखना है क्या? सी सर्कमस्टांसेस क्या कहता है, मान लीजिए ट्रायल में और ये हम लोग ट्रांसफर सीख कर रहे हैं, प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू होता रहे और एक्स पार्ट ऑर्डर पास हो जाए, उससे बेटर है कि आप इंटरिम वहां पर आप सेफली आप सीख कर लें. राइट करेक्ट. ना भी पूछा जाए तो हम प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड रिक्वायरमेंट की क्या है, सो वन लाइन देने में कोई बुराई नहीं है, दोनों के लिए एक एक ग्राउंड लेना है आपको. वेरी गुड सर. वन ग्राउंड एंड वन प्रेयर एंड देन सर क्लियर सर. Please, any more question? Sir, coming back to the previous question, it was suggested by one of the participants, either implement or intervention. But once we say intervention and implement, they are not the same thing. In case you are not affected by anyone, then you can intervene. But if you want to implement, then you are affected. In that situation, intervention, it cannot be intervention, it can be only implement, if I am correct. एज पर माई अंडरस्टैंडिंग सर, मतलब मेरी सिविल की साइड में बहुत कम अंडरस्टैंडिंग है, जस्ट इंक्वायरिंग रादर. इम्प्लीडमेंट इज फाइल्ड बाय द प्लेंटिफ ओनली टू bring more persons on the board, because you will not be able to get proper relief in their absence. That is one thing. Intervention can be filed by the person who is not party to the list, but he has interest or a stake in that particular cause or matter. Is my understanding correct, sir? So I can give an example to this. I had read in one of the, question papers or something. Please. So in implement, suppose there is a situation in a society, in your colony, and two neighbors are affected, right? Those two neighbors are proper parties to that list. However, you are an interested party because you are living although in the same colony. It could be a matter of anything, say garbage disposal, anything, which is also affecting you, but there was no specific dispute between you. You can be an intervener in their dispute, but you can't be pleading, as you may not be directly, your rights will not be directly affected by that specific dispute.
So that I could make out a difference between implement and intervener. So clarity, much clarity with this example. See, the disputed issues are there in the pending matter, but certain additional issues is required to be dealt with. Right. So in that condition, you can move an application for intervention because you are intervening. But once you are directly affected to the list, so chal raha hai, and you are saying that yes, my side is also could be heard before deciding that. That is the implementation. Am I clear up to this point or not? And am I correct or not, Mrs. Niharika Dubey? Yes, sir. Miss Niharika Dubey. Miss Niharika. Sir, my question upon that is, who Sir, will we be... will get a direct judgment on this point. This judgment is Union of India versus Naresh Kumar Badri Kumar Jagat. It is very clear about the third party's refuse maintenance if he is the accused party. It is a very straight judgment. This is the principle is that neither Order 47 of the CPC nor Order 47 of the Supreme Court rules limit the remedy of review only to the parties involved in the judgment under review. Therefore, it is a straight judgment. So what's the name of the judgment? Union of India versus Naresh Kumar Badri Kumar Jagat. Kindly explain again what was discussed in the judgment. The principle is neither Order 47 of the CPC nor Order 47 of the Supreme Court rules limit the remedy of review only. Review only to the parties involved in the judgment under review. If the third party, if he is the accused party, review is maintainable. Not maintainable. Review is maintainable. Maintainable. That Okay, is okay, even okay. the Kindly even share third the parties, judgment in the group, sir. Then my question upon that comes is regarding the example that was discussed by Niharika ma'am. My understanding on that would be impediment can be filed by one of those parties to the list, but intervention will have to impediment will have to be filed by one of those persons who are party to the list, and intervention will be filed, or the locus of the third person will be to file that intervention. Am I right or not? With additional issues, supplementing additional... providing the issues also, because in one of the papers of the drafting, probably 2021, now this area of impediment and intervention was not clear to me. So one of the questions that had come was that the appeal had abated and the substitute was to be, the person had, one of the respondent had died before the period of substitution, but it was not filed, impediment was not filed. Now they want to file after a certain delay. So since I was not aware, I started filing from the side of the legal representative who had to come on the board. Then in midway I got confused, like how can I file when my appeal has already abated. So then I dropped that, completed my paper. Then upon thinking upon how this thing comes, that one of the understanding that I could reach to was this. I think impediment is a necessary and proper party. So far as intervention is concerned, that anybody who feels that his right is also decided in this list can join. Although they may not have the right to reply and be a part of the pleadings and all, but they say that our rights can also be probably decided with this issue. So I want to join in this issue, so that when the judgment comes, it has effect on me as well. This is one of the parameter also, addition to other ability. Necessary party is required for the impediment. Sir, my question is, sir, it is regarding Article 142. Sir, अगर 142
142 का क्वेश्चन आता है, स्कोप पूछा जाता है, तो सर इतना लेंदी है कि हमें क्या क्या सर लिखना है 142 पे? 142 के स्कोप कहाँ लेंगे? सर 2 क्लॉजेज है, 2 क्लॉजेज में अगर हम लिख देते हैं सो दैट इज सफिशिएंट। एग्जैक्टली, दोनों क्लाउज को आप रिप्रोड्यूस कर दीजिए और उसी को डायग्नोस कर दीजिए, मोर देन सफिशिएंट, एवरीथिंग इज अवेलेबल देयर। डन सर, डन सर। सर माय सेकंड क्वेश्चन इज लाइक अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ एडवाइजरी जुरिसडिक्शन? व्हाट आर द रेस्ट्रिक्शंस? कहाँ कभी आया क्या ये? सर ये लेक्चर में क्वेश्चन बोला गया था। और मैंने इसको काफी रिसर्च किया बट मैं थोड़ा नहीं इसको ढूंढ पा रही थी। एडवाइजरी जुरिडिक्शन का जो मेजर टाइम रेस्ट्रिक्शन है जिसको आप कहेंगे, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि दैट इज नॉट एन जजमेंट। एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन के दौरान जो भी एक्सरसाइज किया जाता है, दैट इज नॉट अ लिस्ट, even though the control on evidence and fact is not of the court, even on issues. See, in adjudication exactly होता क्या है, जरा सा इस चीज को समझते हैं, क्योंकि ये एक इंटायर डिफरेंट आर्टिकल, और आर्टिकल मैंने आप लोगों के साथ बहुत पहले शेयर किया था, आई डोंट नो वो अभी आप लोगों के पास होगा या नहीं। There are 3 and 4 parameters. Parameter number 1, which may differentiate between the reference as well as adjudication. Reference में जो precedent question बना करके भेजते हैं, that is the issues before the court. Either it may answer or not answer as per their own norms and standard. So the master of the question is the precedent itself. However, in the list, court will deciding or let down the issues before deciding. ये पहली पार्ट है। कुछ एविडेंस को एक्सेप्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, सो कंट्रोल ओवर दैट एंटायर प्रोसीडिंग्स कोर्ट का होता है। पार्टी प्रोड्यूस करती है, उसकी एडमिसिबिलिटी चेक की जाती है और कोर्ट उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते हैं, इज दिस एडमिसिबल और नो एज पर लॉ इन एडजुडिकेशन। That cannot be happen into the reference, क्योंकि रेफरेंस में जो ऑब्जेक्टिव दिया जाता है आपको लॉफुली उसका आंसर करना है, और करना है या नहीं करना है अकॉर्डिंगली यू विल डू। सो कंट्रोल ओवर दैट ऑन द फैक्ट, ऑन द थिंग्स, नॉट ऑफ द कोर्ट। तीसरा पार्ट, जो रिपोर्ट अल्टीमेटली फाइल होता है, दैट इज द आउटकम ऑफ ऑल द एक्सरसाइज। दिस इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 141. However, in adjudication वो 141 कवर होता है, and in central nature दोनों का बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। Adjudication is the advisory things. Someone as precedent is asked advice from you and you are advising them, so your advice is there. However, in the judgment this is the mandate, it's an order, you need to follow that order. But advisory jurisdiction में it is not mandatory for the president to follow your order. हाँ, ये अलग बात है कि उसको आगे चल करके नरेट किया गया है कि प्रेसिडेंट विल वर्क ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ द कैबिनेट, तो सिमिलरली वो एडवाइस यू कैन नॉट इग्नोर इट, बट इम्प्लीमेंट आप करेंगे ही, वो मैंडेट नहीं, उसको कोर्ट इन्फोर्स नहीं कराएगी ना, या इन्फोर्स कराएगी यदि प्रेसिडेंट ने उसको लागू नहीं किया। इज देयर वुड बी द कंटेम्प्ट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट? आई मीन सिविल कंटेम्प्ट? नो सर। So these are the differences, or you can state the limitation also. Am I clear up to this point or not? Yes sir. Is there any doubt regarding this? No sir. Anyone want to supplement on that? I believe sir in one of the या तो लीडिंग केसेस में से ये एक है, it was discussed in these lectures
या तो अजय जी, सर बहुत सारे जजमेंट है, इवन कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है, दिस स्टार्टेड फ्रॉम वेरी अर्ली ऑन द दिस पर्टिकुलर पार्ट, बट सबका कंपाइलेशन एक आर्टिकल में, एक किसी बच्चे ने किसी कॉलेज के आर्टिकल में बड़ा ही प्रिसाइसली कंपाइल किया था, और वो आर्टिकल मैंने आप लोगों के साथ किसी लेक्चर में शेयर किया था भी, वह मतलब मुझे लगता है कि प्रीवियस लास्ट ईयर हमने शेयर किया था। मैं चेक I करूंगा need सर to अगर find out यदि कहाँ होगा या नहीं होगा. So it is very difficult to find. Lots of documents are there. यस सर But वो उस आर्टिकल में है. ओके सर वन ऑफ द रीजंस So one more factor is coming. One more factor is the important which we need to discuss here, and this is very important. कि what is the legal value of that report? जब वो 141 है नहीं, means not declared है नहीं, तो उसको आप कैसे लागू करते हैं कि वहां ये फाइंडिंग हुई थी, वहां वो फाइंडिंग. द थिंग इज दिस एक्सरसाइज इज डन लॉफुली बाय द एपेक्स कोर्ट, सो वी नीड टू ड्यू रिस्पेक्ट ऑफ दैट फाइंडिंग्स. We cannot go beyond, we cannot ignore it. So that's why this is as equal as the law laid down. However, this is not covered into Article 141, but the system having due respect of that particular finding. ये कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा है? दोनों साइड पे है. हाँ, बट उसको मतलब उसको एग्जैक्टली 141 का फोर्स नहीं है, बट ड्यू रिस्पेक्टेड है, यानी स्टार डिसाइसिस में उसको हम कंसीडर कर सकते हैं, सॉर्ट ऑफ, नॉट एग्जैक्टली, सॉर्ट ऑफ, कि हमने इसको भी मान लिया है कि हाँ ऐसा होना चाहिए. दिस इज सर एक स्टेट डिसाइसिस को लेकर के ही है. अगर क्वेश्चन ये आता है व्हेन प्रेसिडेंट बिकम लॉ ऑफ द लैंड, तो हमें इसमें स्टेट डिसाइसिस को ही डिक्टेट करना है आंसर में. प्रेसिडेंट बनेगा तो डिसाइड डिसाइसिस पे ही होगा ना, वो लॉन्ग टर्म लंबे समय से वो होल्ड कर रहा हो फील्ड को, मे बी राइटली और रॉन्गली. ये फॉर एग्जांपल है ट्रिपल तलाक. दिस कल्चर is prevalent from since long back, but need to be disturbed, मतलब intervention was required, तो कोर्ट उसको डिस्टर्ब किया, अंडर वायरस डिक्लेयर किया, टेस्ट किया. तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें होती है जो प्रैक्टिस में होती है, वो अननेसेसरी डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं है जब तक रिक्वायर, मतलब यू नो इन्वोकिंग सर्कमस्टांसेस नहीं आए कि उसको डिस्टर्ब करना. Sir, in that, again going back to the previous question, one of the reasons that was said, one reference certain questions were asked, Supreme Court had refused to answer certain questions, saying that these questions have been framed so as to overturn the judgment. Probably it was Ram Janmabhumi's judgment. So they had refused when the answers to such question would be affecting the force of the ultimate judgment only. They had refused to answer certain questions. They had supplied answer to only few questions. They categorized in some judgment certain nature of questions we will not answer. Some legal question they can answer. You know, the legal is the very different. Something may be political which cannot be a legal. Something may be a moral but cannot be a legal. Sir. ये बड़ा ही fine line difference है to identify. See, something is done at the political end. It's a political domain. It should not be discussed into the legal domain. क्योंकि वहाँ पे law existence में होता नहीं. Law means legal domains means certain right as they are there which is being infringed. Lawful right are being infringed. तभी तो वो legality पे enter करेगा. लेकिन जो मोरालिटी की बात है वो लॉ के अंदर वो उसका स्कोप बहुत ही लिमिटेड है. वो कहते हैं ना, आज मैं एक न्यूज में सुन रहा था कि नैतिक रूप से प्रधानमंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए, बट लॉफुली ही इज द लार्जेस्ट पार्टी,
his alliance having the mandate. So नैतिकता is the very different. This is not covered under the law. For example, मैंने आपको ये बतलाया, which is a very live and pertinent thing. So, Sir, my another question is regarding how many article. questions left, Sudha? Sir, only one question left. Rest are done. Okay. This I is my was last one. impatient, little bit impatient. Please continue. Sir, I can ask this question in last. No, continue. Sir, my question is, which suits cannot be entertained by the Supreme Court of India under Article 131, question mark, which are beyond the pale of judicial review and adjudication of the Supreme Court? तो सर जो हमारा ऑर्डर 25 to 27 of SCR है, that deal with original suit. And what I have read is, a claim by the private individual cannot be entertained under Article 131. सर इसमें मेरा आंसर खत्म हो जा रहा है. तो यहाँ पर हाँ खत्म हो, that is good ना. मतलब प्राइवेट पार्टी किसी भी तरीके से अब वहाँ पार्टी बनता है या either way of implement or intervention, that is not allowed. सर बट क्वेश्चन लेती है, डबल क्वेश्चन है सर. ठीक है, अगला मेरा जवाब वही होगा कि नहीं समझ में आता, अवॉइड कीजिएगा इसमें. But second part is there, sir. प्रोवाइजो भी डिस्कस कर सकते हैं मैडम. प्रोवाइजो में भी एक सेक्शन है कि लीगल राइट होना चाहिए. एग्जैक्टली मैंने कल आंसर किया था एंड दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग कि आपने वो डॉक्यूमेंट को जब आप पूरा पढ़ें व्हिच इज कैटेगरिकली डिस्कस्ड अबाउट दैट एवरीथिंग, ईच एंड एवरी फैसेट्स, कि कब एंटरटेन होगा, कब एंटरटेन नहीं होगा. अब प्रोवाइजो का जो वो पार्ट है लीगल इफेक्ट, अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ मस्ट हैव सर्टेन लीगल इफेक्ट. So उस पर्टिकुलर पार्ट का ही वो इम्पोर्टेंट. इसमें 262 आएगा सर, 262 excluded, treaties, agreements excluded. So these are there. The so many things is discussed into those specific page. Am I right or wrong, Ajay ji? Yes, sir. And all of you are remember which document? Yes, sir. उसको आप पढ़िए, आपको सारी क्लैरिटी आएगी. मैं इन बिटवीन भूल ना जाऊं, एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं. Today we are at the 5th. Yes, sir. 2 more days is left for this discussion. Certainly it would be going to be closed on 7th. एक दिन मैं ये चाहता हूं कि कुछ कॉपियां आप लोगों की RTI से निकाली हुई है. And this is the right moment to point out the mistake whatever is made into that copy. Sardaji, am I allowed to do that? Yes, sir. Please, sir. So वो मिस्टेक्स वहाँ किसी भी सूरत में नहीं होने. एक सेकंड मुझे जरा प्रियंकर सर, एक बार आप थोड़ा सा इस पे और लाइट डालेंगे 131 पे. What more I can add other than proviso? मैं आपको एक स्क्रीन शेयर करना चाह रहा हूँ आउट ऑफ दैट. Yes, sir. ओके. And of course this is not सरदास कॉपी, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, बट फिर भी मैं देख रहा हूँ. विशाल की कॉपी है एंड विशाल इज हियर. विशाल? नो, विशाल इज नॉट हियर. आई एम सॉरी, उनके एब्सेंट में वैसा विशाल की कॉपी को मैं शेयर कर रहा हूँ. ये हमने किया भी है. उन्होंने ये ड्राफ्टिंग की कॉपी शेयर की थी और उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज द मिस्टेक. हमने इसको पॉइंट आउट किया था कि इसके अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, इफ यू विल रीड दिस यू कैन नॉट फाइंड कि व्हाट इज द केस. सो क्लैरिटी इज नॉट देयर. मैं रीड आउट करता हूं. दैट इन द इंस्टेंट SLP is filed against the impugned order this in section second appeal passed by the Honorable High Court, whereby the Honorable High Court erroneously allowed the second appeal of respondent herein and set aside the judgment of पता नहीं, pleased by the Honorable High Court of First Additional District Judge Bokaro in the title appeal and thereby restored
the judgment and decree passed by the learned subordinate Judge 3 Bokaro, whereby the learned trial court decreed the suit declaration that the deed of adoption was illegal, invalid, and not binding on respondent. करेक्ट। अब इस पॉइंट पढ़ने के बाद आप केस क्या है क्या समझ में आया? इट इज अ फैक्ट व्हाट हैपेंड बियॉन्ड बिलो द कोर्ट बिलो। दिस इज जस्ट एन फैक्ट। दिस इज कंसर्न टू द impugned impugned judgment before this court. But what is the issues involved? Exactly what issues you need to address by the court? It should be mentioned here. हाई कोर्ट ने क्या एग्जैक्टली गलत किया है वो आपको पॉइंट आउट करना है और किस इंटरप्रिटेशन के लिए आप यहाँ पर लाए। क्वेश्चन ऑफ लॉ, विच लॉ यू नीड टू इंटरप्रेट एंड स्क्वायरली मैपिंग ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट along with the fact. That is the important part for the purpose of synopsis. जिसको पढ़ने के बाद लगे कि अच्छा ये केस है तो ये डिसाइड होना चाहिए, ये नीचे का फैक्ट है। बट एनीवे मैं थोड़ा और डीप डाउन जाऊं, यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेट। एक चीज और यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको मैंने मार्क किया था। व्हाट इज द एरर इनटू दिस लिस्ट ऑफ? सर एस होना चाहिए लिस्ट ऑफ डेट्स। Assessment. This is a very minute missing, but suddenly वो attract करता है। And events. हाँ, and events is also there. Not only that, even the events you are putting there. थोड़ा और आप पास करें। Selected page है, मैं selected page पे ले जाना चाहता हूँ और certain mistakes was blunder। ये देखिए, ये SLP जब आप लिखते हैं तो लिखते हैं अंडर आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सो इसको इस लाइन की रिक्वायरमेंट कहाँ है? अगेंस्ट द impugned judgment and final order dated this। रिपीटेशन यहाँ पर है, दिख रहा है। once you are written there is no need to write all these things here। कहने का मतलब you can save your time and energy and even you can put there the neatness। इस पैराग्राफ को which is the another paragraph under article 136 of the constitution of India against the impugned judgment, ये पार्ट यहाँ यदि हम नहीं लिखें क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इनटू द एसएलपी। एम आई क्लियर अप टू दिस पॉइंट और नॉट? सर ये पूरा आई मीन दिस होल टाइटल दैट हैज बीन मेंशन और जस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट? नहीं, मैं ऊपर में पैराग्राफ में फिर से जरा कर्सर ले जाऊं और वहां पर आपको पॉइंट आउट। Yes. Is this portion is required? Sir, this happens. This reflects the state of mind of the examinee and clarity of mind and ambiguity of mind also. Sir, I would want to bring one point here. It is not his mistake. जब ये जो पेटिशन एग्जाम्पल्स फॉर्मेट्स फ्लोट करते हैं ना, ये फॉर्मेट दे दो, जो जनरली इन प्रैक्टिस है, जो ये लाइव लॉ से डाउनलोडेड पेटिशंस फ्लोट होती हैं उसमें ऐसा लिखा होता है। आपको मैं अजय जी एक बात, बहुत अच्छी बातें आपने बोली है और इस पॉइंट पे मैं बहुत तरीके से रिएक्ट करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ और पहले मीटिंग से हमने इसी फाउंडेशंस के ऊपर रखा है कि व्हाट इज द ऑथेंटिक सोर्स ऑफ मटेरियल। हमने हमेशा सुप्रीम कोर्ट के साइट्स को, कॉन्स्टिट्यूशन को, रूल्स को रेफर किया है और इसके अलावा किसी भी सोर्स को हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। राइट सर। समटाइम्स थिंग्स आर मिसलीडिंग और वो कहीं ऐसा ना हो कि डिजास्टर में कन्वर्ट कर जाए। सो इसी पॉइंट को हाईलाइट करने के लिए हमने ये कॉपी निकाली। और दूसरी बात ये
एक और चीज मैं आपको ये बताऊं कि दूसरा पॉइंट जो हमने आपको पॉइंट आउट करना था वो ये है, इन ट्रायल HC इन दिस कोर्ट, आप जरा देखिए, एक छोटी सी बात है, मैं बहुत ज्यादा नहीं ले जाना चाहता हूं। ये जो पॉइंट है यहाँ पर इन दिस कोर्ट ब्रैकेट के बॉक्स के अंदर, डज दिस लाइक दिस, ये हिज नहीं लग रहा है। राइटिंग पैटर्न हो सकता है, बट यू नीड टू बी केयरफुल कि सामने वाला के अंदर क्या इंप्रेशन जाएगा। ये छोटी छोटी वो चीजें हैं जो कि हमको क्लैरिटी के साथ जानना चाहिए। और यहाँ जो लिखा हुआ है इन इनिशियल, देखिए शुरू में इन ट्रायल कोर्ट है, हाई कोर्ट है एंड इन दिस कोर्ट है। एंड यहाँ पर जो ये पार्टी है, यहाँ सबऑर्डिनेट जज, एडिशनल जज, हाई कोर्ट एंड फिर दिस कोर्ट। यहाँ पर डिफेंडेंट, एपेलेंट, रिस्पोंडेंट एंड पिटिशनर। सो इतने सारे पोजीशंस इंसर्ट करने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द ट्रायल, हाई कोर्ट एंड दिस कोर्ट। क्लियर है और नॉट? क्योंकि ये पार्टी बनाना भी अपने आप में थोड़ा कंफ्यूजन है, बहुत सारे कंफ्यूजन को लीड करता है। सो मैक्सिमम 3 रखिए, not more than that. Another part, if you will go down versus, ये क्या लिखा हुआ है जरा आप इसको पढ़िए तो। Respondent number 1, what is there? Not a party. Not a party. Not a party, not a party. Respondent number 2. सो इस जगह पे वो क्लियरिटी होनी चाहिए। जो एक जगह पर आप प्लेंटिफ है, अगले जगह पर आप नॉट अ पार्टी कैसे हो सकते? जब आप ट्रायल कोर्ट के अंदर प्लेंटिफ हैं और आगे आप नॉट अ पार्टी है, तो इट कैन बी, बट मे बी, बट आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्लियरिटी लेना होगा, अदरवाइज एक रूप ऑफ वाइड भी करें तब भी चलेगा। अब आप आगे देखिए, दूसरा पॉइंट वहां पर था, अब मैं थोड़ा सा और आगे आना चाहता हूं। ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है आपके स्क्रीन पे, 2 सेट है। अजय जी आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप पढ़िए। एक जगह येलो हाईलाइटेड है, वहां पर वो वर्ड का जो मीनिंग है ना कुछ अलग रिफ्लेक्ट करता है, व्हाट वाज शुड बी देयर। जरा सा अजय जी वो पहला पैराग्राफ ए वाला पढ़िए तो। वेदर लिखना वो शायद द चाह रहे थे, वो ही दिख रहा है। वेदर द ऑनरेबल हाई कोर्ट फेल्ड टू एप्रिसाइट हैट दैट द अडॉप्शन डीड 15/3/65 was executed by the respondent herein with free will and the same was not challenged more than 25 years? Question mark. What is the question? What is the question? दो एस्पेक्ट आप यहाँ पर सोचिए। Whoever is wrote this question, what he want to convey, one part. But another part, what is the message coming out of this question? Second part. And third part, whether this is a question. Doesn't give complete sense, sir. That's what I am saying. The point is this, whether the Honorable High Court failed to appreciate that adoption did this was executed by the respondent number 2 herein with free will, and the same was not challenged more than 25 years. So the point is this, अब जरा हम इसके इंटेंट को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि 15/3/66 को एक अडॉप्शन डेट हुआ, 25 साल तक वो चैलेंज नहीं हुआ। इस फैक्ट को हाई कोर्ट को एप्रिसिएट करना चाहिए।
और उसे अप्रिशिएट करने में वो फेल हुआ है। दिस इज इटसेल्फ अ फैक्ट। आपको लैंड अप करना है कि व्हाट miscarriage of justice happened before by way of this. You are in SLP, na? So by not appreciating this particular fact, क्या miscarriage of justice lead हुआ है, किसके ऊपर क्या impact पड़ा है और कैसे? Does this law allowed या law frustrate हो रहा है, क्या हो रहा है, वो उससे connect आपको करना पड़ेगा। और ये कहिए कि now we cannot achieve any purpose with that, otherwise the miscarriage of justice is happening, क्योंकि at this stage if you will disturb it, so certain consequence will come out। इससे तीन चीज मैं रिफ्लेक्ट करना चाहता हूं। क्यों एग्जामिनर कहते हैं कि प्लीज यार नीटली लिख दो। नंबर 2, स्टेट ऑफ माइंड ऑफ द एग्जामिनिंग, कि वो थोड़ा हड़बड़ाए हुए हैं। इसको ओवररूल करने के लिए यू मस्ट हैव टू रीड इट अगेन। मैं समझता हूं बहुत लोगों की इंग्लिश मेरी तरह होगी, जो बहुत अच्छा नहीं होगा, बट स्टिल जब आप उसको वापस रीड करेंगे ना तो करेक्शन के मोड होंगे। और उनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन है थोड़ा और राइटिंग का प्रैक्टिस कर लें। एक कंप्लीट सेंस वहां से रिफ्लेक्ट होना चाहिए, एक क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होना चाहिए जो एक अच्छा इंप्रेशन दे। आप 4 के बजाय 1 ही लिखिए, लेकिन लिखिए सटीक। अगला क्वेश्चन आप रीड आउट कीजिए, देखिए वहां से भी कोई मैसेज निकलता। सर यहाँ पे मैं रोकूंगा सर, आपको रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे आप क्या क्वेश्चन बनाते, कैन यू एक्सप्लेन दैट आल्सो प्लीज, वी वुड फाइंड अ नहीं, दैट्स नॉट द पॉइंट, दैट्स नॉट द पॉइंट। सर हमें एक गाइडेंस मिल जाएगा आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन हमने रीड नहीं किया है ना। Okay, मैं ये sir. दिखला रहा Okay, हूँ sir. कैसे Okay. गलतियां होती हैं Okay, sir. जो नेगेटिव मार्क्स पे ट्रांसलेट होता है। बहुत कहते हैं बहुत कुछ दिखाना, आई विल कम बैक Okay, sir. अगेन ऑन Okay, दैट, sir. बट Well- एट दिस मोमेंट समथिंग दिस मे बी ए ग्राउंड बट इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ। ओके सर, दिस मे बी ए ग्राउंड बट मतलब लॉफुली जो हाई कोर्ट को करना था वो हाई कोर्ट ने सेट स्टैंडर्ड के अगेंस्ट में जाकर के कुछ किया है। इसको इसका मतलब यू नो इट्स इनकम्प्लीट पार्ट, बट एनीवे whether the honorable high court failed to appreciate that the petitioner proved his entire chain of events in by adoption and registration of deed, proved the entire chain of events in including मान लो adoption and registration। इसका आंसर यस होगा या नो होगा। यदि फेल टू एप्रिशिएट है देन करेक्शन रिक्वायर्ड। यदि फेल टू एप्रिसिएशन नहीं है, करेक्शन रिक्वायर्ड, मतलब फेल टू एप्रिसिएशन करना ही करेक्शन रिक्वायर्ड थोड़ी है। मान लीजिए कि कोई भी चीज की जो मटेरियल फैक्ट ही नहीं है, व्हाई शुड आई एप्रिशिएट इट, व्हाई शुड कोर्ट एप्रिशिएट इट, राइटली और रॉन्गली, व्हाट इज द रिलेवेंसी फॉर दैट। और एडॉप्शन एक्ट पे कैसे इसका इंपैक्ट पड़ता है, दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं सिर्फ गलती नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं ये आपको पॉइंट आउट करूं। हाँ, एक चीज और यहां पर मैंने पॉइंट आउट करना था कि ये जो कटिंग पॉइंट है ना, ये कटिंग पॉइंट और ऊपर में लिखना, इसको थोड़ा सा नीटली आप लोग कट कर सकते हैं और आगे प्रोसीड कर सकते हैं। So इसमें if you don't mind me asking, कितने नंबर मिले थे? I'll show you. मैं एक्चुअली पूछ रही थी सर, उन्होंने फॉर्मेट तो पूरा किया है, मतलब ओवरऑल जो उसका फॉर्मेट होता है। मैं एनालाइज करूंगा, पहले मैं जो पॉइंट आउट करना चाहता हूं वो मैं कर दूं। वायलेशन ऑफ राइट टू प्राइवेसी।
No, not privacy. This is the 8. He got the 8 marks. You can see here the 8. Out of, sir, 20? Obviously 20. You can see that there is a 8. See, the spirit of the question comes from the fact, na? It should be clarity in your mind. Format itself, see, यदि आपको कहा जाए कि फॉर्मेट डिफरेंट है, फॉर्मेट का एकदम बिल्कुल करेक्ट है. पहला एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया था, व्हाट आई स्टेट, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली और रिपीटेटिवली आई सेड, वन एग्जाम में मुझे ये डाउट आया था कि फॉर्मेट यदि करेक्ट कर दिया तो क्या हो. सो व्हाट आई पिक्ड अप 3 स्टैंडर्ड क्वेश्चन ऑफ लॉ. डिड एरर इम्पुग्न्ड ऑर्डर के द्वारा हाई कोर्ट ने अर्ड कर दिया और ये कर दिया वो कर दिया. 3 स्टैंडर्ड ग्राउंड लिया जिसका फैक्ट से कोई कनेक्शन नहीं था. इट वाज एंटायरली डिवोर्स फ्रॉम द फैक्ट और फॉर्मेट बिल्कुल करेक्ट था. सो जब हमारे पास क्वेश्चन आया तो हमने क्वेश्चन देखा भी नहीं, देख लिया ये एसएलपी सिविल है, वेरी गुड, और उसके बाद क्वेश्चन बंद किया. हमने अपनी एसएलपी लिख दी, 3 ग्राउंड ले लिया जो अपने दिमाग से था और वैसे ही जनरल फैक्ट ले लिए जिसको उस फैक्ट से कोई कनेक्शन नहीं था, एंड आई कंप्लीटेड एंड आई गॉट द 34 मार्क्स ऑन द फॉर्मेट इटसेल्फ. Then the next attempt, what I did, I decided, very purposely I decided, drafting में, कि I will never ever write any format, but I'll enter completely into the spirit of the question. I entered into the spirit of the question, और एकदम format नहीं लिखा, सीधा लिखा ground and this is the ground, question of law and this is the question of law, and then left it. Synopsis, ground and question of law लिख करके हमने छोड़ा सारे क्वेश्चंस. Again I got 35 marks. So then I decided, and now I will combine it. फिर मैंने दोनों को combined कर दिया. Then I got the 58 marks. But less than 60 it was. So then I realized कि इन 3 facts के अंदर कैसे इसको compile करना चाहिए. So completely you never ever leave the entire format. Then again, spirit of the case is also there, which can reflect your understanding. You just pick up the case, and synopsis is also supporting into them. And after that, the things in before you, जहां पर मैंने कितने 70 नंबर लिए इसमें, 70 मार्क्स. सो द फॉर्मेट स्पेशली एक ऑर्गन है, बट इंटायर बॉडी के लिए हर सिस्टम को इनकॉर्पोरेट और सिंक होना चाहिए. तो कोई भी क्वेश्चन का जो ग्राउंड होगा, यदि फैक्ट से डिवोर्स होगा, यहाँ पर जो है वो फैक्ट से कनेक्ट, लॉजिकल कनेक्टिविटी यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया, one part, but something serious blunder was there. As far as I remember, sir, ये question मैंने solve किया था. In this question, the High Court had read a ground into the statute which was not there. Presume करके एक ground. अजय जी, मैं थोड़ा सा यहाँ पर आऊँ. Sir. Ultimately, he written the prayer for interim relief, and what is this? Grant ad interim ex parte stay and on the operation of impugned judgment and with order dated this second appeal passed by High Court Jharkhand. So इस तरह से आप ये जो प्रेयर आप कहेंगे, तो ठीक है. But one serious mistake was there. One things are there. ये वो point है, आप देख रहे हैं, आप blue screen है आपके सामने. क्या पर सर नाम लिखा हुआ था इनका? हाँ सर, क्या इन्होंने नाम लिख दिया था सर? Exactly, his full name and signature was there. शोकॉज नोटिस इशू नहीं हुआ था इनको? बच गए.
नोटिस एक नहीं हो किया। गया सर कि सिर्फ मेरे कॉलेज में एक कॉपी है एग्जैक्टली, मैं उस इंसान को इंडिविजुअली भी जानता हूँ, आई विल नॉट टेक द नेम एंड ऑल। उन्होंने सिर्फ अपनी कॉपी पे रोल नंबर लिख दिया था लास्ट पेज पर, उनके अगेंस्ट नोटिस इशू किया गया था, उनकी रिजल्ट होल्ड कर ली गई थी और रिजल्ट वो अल्टीमेटली डिस्क्लोज नहीं हुआ, विद वार्निंग उनको छोड़ा गया। ये ब्लंडर आप लोग बिल्कुल मत कीजिएगा। मैं कॉन्सिक्वेंस इसीलिए सुना रहा हूं क्योंकि हमने एक, आपको याद होगा कि अभी अभी हमने गूगल करने के लिए उसके अंदर अराउंड 100 to 100 लोगों ने उसको फिलअप किए हैं। आउट ऑफ देम अराउंड 34 आर 34 नहीं, अराउंड एग्जैक्टली मैं आपको बताऊं, 20 are those who is appearing for the second, third and fourth attempt, but 80 in the first attempt. और इस तरीके की गलती यदि हो गई ना तो इट वुड बी ब्लंडर। इससे बचिएगा फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए। सेकेंड अटेम्प्ट वालों के लिए यहाँ पर है, यहाँ पर मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 persons is appearing for the regulation, only one paper. Out of them 4 are appearing in paper 1 and 2 are appearing in paper 3. मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आफ्टर फिनिशिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन आंसर सेशन, आई विल बी कीप इन टच विद दोस टू पर्सन्स पर्सनली इन लाइब्रेरी, and Ritu is not there right now, she was yesterday. तो उनको मैं पर्सनली मॉनिटर करूंगा कि उनके पास 4 एक्स्ट्रा डे हैं before coming on the exam. So this is the advantage of the statistics what I get here. Now मैं थोड़ा और प्रोसीड करूं। इन्होंने एक जगह नहीं, रिपीटेटिवली कई जगहों पे अपना नाम लिखा। अच्छा, दूसरा एक ये एग्जाम्पल आपके सामने, लिख करके कट करना ऊपर वाले पार्ट में, आपको कंफ्यूजन है, ये फॉर्मेट पार्ट है, ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि यहां पर इतनी मिस्टेक नहीं होगी, इससे भी बचिएगा। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, प्रैक्टिस। देख रहे हैं, दिस इज द स्टेट ऑफ माइंड ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। ये रिफ्लेक्ट करता है कि कितना दिमाग में कंफ्यूजन रहा होगा। देख रहे हैं कितने कटिंग है, यहां पर भी कटिंग है। अच्छा, यहां पर आप देख लीजिए, ये क्या है, रिस्पोंडेंट नंबर 7 है कि ₹7 है। बी अवेयर। सर ये रिफ्लेक्ट कर रहा है सर उनके प्रेशर कितना ज्यादा है दिमाग पे। नहीं, एक प्रेशर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, आई एम नॉट डिनाइंग, बट ये एक हैबिट भी रिफ्लेक्ट कर रहा है सर। आपकी नहीं, आई एम सॉरी, ये एक कैजुअल हैबिट, कैजुअल अप्रोच भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबल एंड सिंसियर अप्रोच होना चाहिए। Am I right or wrong, प्रियंका सर? सर एब्सोल्युटली सर। तो मतलब ये छोटी छोटी चीजें हैं ना, जो एक्यूमुलेट करके गुड इंप्रेशन एंड बैड इंप्रेशन की तरफ लीड कर देता है, जो कहीं ना कहीं मार्क्स में लगता है कि अरे यार इसको 1 नंबर एक्स्ट्रा नहीं, 1 नंबर कम ही दे देते हैं। अब विच हैविंग मैटर्स, 4 या 5 नंबर पे बहुत गेम चेंज हो जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे इस बार लोकसभा में 1 सीट का आना और नहीं आना वो फर्क पड़ता है। So these are the thing जो मैं दिखा रहा था। देखिए यहाँ पर भी सिग्नेचर है इनके, ये देखिए, क्या लिखा हुआ वो? Completely ignored the evidence on record. Impugned or completely missed the evidence. While what is this? While While passing the impugned order, completely ignored the evidence on record.
that is called, a word is there, the word name is, it is called the perversity. So that word, if you want to use that word, you can convey the complete, identical and clear message. यहाँ पर आपको यहाँ बताना पड़ेगा, this is a very general nature also, which record they not considered, it was the pertinent. Which record? See, merely allegation लगाना अलग बात है, लेकिन उस allegation के against में some substance and evidence or something substantiate करना एक अलग foundation उसका आ जाता है ना. So be careful on this particular part, क्योंकि ये थोड़ा vagueness की तरफ जा रहा है और word भी selection clear होना चाहिए, वहां पर उसको improve किया जा सकता है for the purpose of improvement. देखिए कटिंग कितने आ रहे हैं, स्टेट ऑफ माइंड यहाँ किस तरह से आ रहा है. ये देखिए, अच्छा एक चीज और आप देखिए, ये प्रेयर है, प्रेयर इस तरीके से लिखा हुआ है कि ऐसे लगता है कि वो कोर्ट को कमांड दिया जा रहा है. तो बी केयरफुल थोड़ा सा कि एक रिस्पेक्टेबल में आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, कुछ उस तरीके का होना चाहिए. हाँ भाई साहब, ये राजीव भाई कैसे हो? बस 2 मिनट में नीचे आ गया. आप नीचे में हैं? अच्छा नीचे ही हूँ. आ गया 2 मिनट में. जरा मैं इसको फिनिश कर दिया. तो ये सारी बातें हैं, मैं थोड़ा और, मैं कुछ और बचे हुए हैं, इसको मैं कर ही लूं. आप ये देखिए ब्लू स्क्रीन कितनी बार आपको दिखा, जस्ट काउंट कीजिए. 1 2 3 4. तो एटलीस्ट 4 प्लेस पे ये सारी चीजें हैं. एक सिग्नेचर मोर देन सफिशिएंट है डिस्ट्रक्शन के लिए. बहुत सेफली मैं बोल रहा हूं, और मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोग ऐसी मिस्टेक करेंगे, वो मुझे भरोसा नहीं है, बट फॉर द सेक ऑफ अलर्टनेस मैं ये सारा चीजें आपके सामने ला रहा हूं कि पता नहीं गलती से कौन सा क्या मिस्टेक हो. श्रद्धा जी हैं अभी? मैं इस स्क्रीन को अभी हटा रहा हूं. कल मैं श्रद्धा जी की कॉपी भी आप लोगों के सामने शेयर करूंगा विथ ड्यू परमिशन ऑफ हर, और मैडम ने परमिशन दिया है. 2-3 एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि कैसे गलतियां हो जाती है और उस पर कैसे अलर्ट रहना चाहिए. ये लास्ट मोमेंट है. पहले मैं बोलता था तो ऐसा मुझे लगता था कि अभी तो लोग प्रिपेयर भी नहीं है, लेकिन इस जंक्चर पे मैं ये कह सकता हूं कि नाउ यू आर प्रिपेयर टू एंटर इनटू द एग्जामिनेशन. सो अब जो मैं बोलूंगा रिगार्डिंग दिस, वो सीधा सीधा दिमाग के अंदर जाना चाहिए, और मैं डरा नहीं रहा हूं, बेसिकली आप लोगों को अलर्ट कर. So with these words, let us conclude for the day. We'll meet tomorrow with certain copies, और आधे घंटे में copies को demonstrate करूंगा on various papers, certain mistakes, certain analysis, certain improvement जो मुझे लगता है, और बाकी आप लोगों का जो and discussions. Thank you, sir. Thank you very much. And hopefully अब तो question आप लोगों के पास है ही नहीं. This is all exhausted. Sir, if you permit. Your last question is exhausted, Sundar.
Yes, sir. That's why I'm asking for tomorrow. Okay. I would request other members if they want to. I mean, we can discuss question papers if they have any in mind. Certain questions that they are facing obstructions with. So we can close. Okay. Good night, sir. So good night, everyone. Good night, sir. Good night.